Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm here today to do a little story time about uh ghosts. I think we all love that topic. And yeah, so this is what I'm about to say is a real story which recently happened with one of my friends over here in England, Loughborough. So let's get started. So yeah, I'll start saying this story. I'll just speak in English and in Hindi in between. So because that's how I talk, and this is like a totally unprepared video. It's literally so organic and natural because I just thought of putting it out there. I was actually cleaning my room right now and I thought ki kuch karte hain, and I thought ki okay, let me just tell them about this story that I heard from my friends like 2 or 3 days back when I went to this house party. And या माहौल पूरा ही डरावना हो गया था. सो द थिंग इज़ कि एज यू ऑल नो कि इंग्लैंड इज़ अ वेरी ओल्ड हिस्टोरिक प्लेस, अ कंट्री, राइट? वी व्हेन वी थिंक ऑफ इंग्लैंड वी लाइक ओ क्वींस एंड महाराज वाला एरा एंड colonization and wars, right? So the thing is that I'm sure most of you are aware that यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारे घरों के नीचे डंजन्स बने रहते थे where people क्या soldiers used to come and they used to hide in those dungeons, or like many a times they used to be punished and locked up in the dungeon jails. And in today's time in modern day England, यहाँ पे dungeons पे ही घर बनते हैं. Like they don't give a shit कि क्या हिस्ट्री रही है इस जगह की. They just want कि घर चाहिए, घर ले लिया, एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिफर्बिश करके घर खड़े करते हैं यहाँ पे. बट उस टाइम पे डेफिनेटली डंजन्स होते थे जहाँ पे काफ़ी लोग कैद होते थे, एंड बहुतों की मौतें हो चुकी है यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी क्रीपी एंड हॉन्टेड प्लेसेस. आई डोंट थिंक कैपिटल्स में इतने ज़्यादा भूत का ये है, बट आई डेफिनेटली लाइक स्मॉलर टाउन्स लाइक Loughborough where I live, or if you say Sheffield, is I think is very haunted. बहुत सारे, I think one of the Conjuring films was also based on Sheffield if I'm not wrong. So you can understand कि what I'm talking about. So the thing is कि क्या हुआ कि my friend and her friend, they decided one day, so अभी Christmas holidays चल रहे हैं, no one wants to sit at home, and they're like, okay, let's go and explore Loughborough, let's see what the city has in store for us. So they went and they kept on walking until they reached one spot which is near one accommodation here. It's called Fork Egg. So that's one of the student accommodations of the university. They went all the way over there. It's about a 35-minute walk from the town center. So they went all the way up to the Folk Egg accommodation, and there's a road right beside the accommodation. So वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया है. एक्चुअली ये पूरा शहर ही सुनसान है. यहाँ पे 5 बजे के बाद कोई नहीं दिखता है रास्ते में. एक तो 3 बजे इट बिकम्स पिच ब्लैक, सो पीपल प्रेफर टू स्टे इनडोर्स. So I think they went around this time itself, like around 5 p.m. ish. So what happened was कि they were walking and everything was fine until they reached that Fork Egg point, and वहाँ पे एक रास्ता था, and they had not really been to that place before. But this other friend of hers, so let's call my friend A. I can't think of any names right now, so okay, let me just call her my friend. Okay, so my friend and her friend, uh, so the friend already knew that this place is kind of haunted because apparently her grandfather had also studied in Loughborough, and he used to tell them stories कि यहाँ पे क्या हुआ करता था पहले, and यहाँ पे भूत उन्होंने खुद देखा हुआ है अपने आँखों से. But she didn't really believe him, right? She was like, ah, बस कहानियाँ है, and she was aware about this fact. Still, they decided to ignore all of that, and they went there in that creepy street. And वहाँ पे घर थे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था. वहाँ पे घर थे वहाँ पे, बट बहुत सारी ट्रीज थी एंड काफ़ी अंधेरा हो रखा था. तो दे वर वॉकिंग, एंड देन दिस गर्ल, द माई फ्रेंड्स फ्रेंड, शी हैज़ अपेरेंटली सम सिक्स्थ सेंस where she can sense things that a normal person can't see or feel. Some people do have that gift. So she does. So what happened was ki they were walking, and this girl, she suddenly felt something. Okay, she felt and then she stopped, and my friend kept on walking. Now when she was walking, this friend of hers, she's like, stop walking. And she suddenly stopped. She's like, what happened? But she didn't turn back, and she's like, don't turn back. अब उसकी फट गई, मतलब वो डर के मारे उसका हालत ख़राब हो गया कि क्या हो गया, ऐसा मुझे क्यों बोल रही है पीछे नहीं मुड़ने के लिए.
तो वो बोल रही थी पीछे कोई हाल में मत मुड़ना, आगे चलते जाओ। एंड उसने बोला ठीक है। एंड अचानक से मेरी दोस्त को लाइक कान के पास जब एक बहुत ही तेज़ गाड़ी पास होती है तो वो एक साउंड आती है राइट हमारे कानों के पास, तो उसे वो आवाज़ आई। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे एक गाड़ी, एक इंसान नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था, तो ये आवाज़ आना ही पॉसिबल नहीं है राइट। बट शी स्टिल हर्ड दैट साउंड एंड एज इफ उसके साइड से कुछ निकल के गया हो, वैसा उसको फीलिंग आया। इवन दो शी लाइक वो बोलती है कि शी इज़, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन हम लोग के कल्चर में राक्षस गण कुछ होता है, तो शी सेज दैट शी इज़ राक्षस गण, एंड राक्षस गण पीपल कांट रियली फील एनीथिंग इफ देयर इज समथिंग suspicious or haunting happening around them, so they really can't feel something like that. But this person, my friend, she's actions gone, but she still heard that shh wala awaz, like as if a car is passing by, but there was no car, there was no person over there. So it kind of freaked her out and she started getting goosebumps, right? And then because her friend told her कि मतलब पीछे मत मुड़ना, वो नहीं मुड़ी, वो आगे निकलती गई, चलती गई चलती गई चलती गई, एंड फाइनली उसे वो सिमिलर स्ट्रीट दिखी जहाँ पे वो आते जाते रहते. शी इज़ लाइक थैंक गॉड आई रीच दिस प्लेस, right? And then her friend like was right behind her, and when she like they met up finally, she's like, why did you tell me to stop? एंड देन उसकी फ्रेंड ने, उसकी फ्रेंड का हालत ख़राब हो रखा था, मतलब उसके फेसेस के एक्सप्रेशन एकदम, शी वॉज लाइक आई सॉ समथिंग, एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक वॉट? एंड देन her friend was like, I saw a figure right behind you. And then my friend was like, what? And then she was like, yeah, I saw like a figure behind you, and I know what that figure, who that figure is. Like, since I can feel and see things a bit, I sensed कि तुम्हारे ठीक पीछे कोई खड़ा है एंड वो वेट कर रहा है कि तुम मुड़ के पीछे देखो, इसलिए आई केप्ट ऑन सेइंग कि पीछे मत मुड़ना. एंड थैंक गॉड तुम नहीं मुड़ी एंड तुम आगे चलते गई. एंड देन उसकी हालत ख़राब हो गई, वो लोग जल्दी जल्दी चल के घर गए. एंड she, guess what, my friend fell sick after that, that girl fell sick after that. She legit booked appointments, like psychologist के साथ she booked appointments, because like she was so scared, like she was really scared. So and then she like कुछ दिन बाद जब वो थोड़ी like better हुई, तो then she explained कि how she knew this person, like this particular spirit या जो भी था. She was like, my grandfather used to study here, and he did mention about this person, like this person had apparently committed suicide like 20 years ago, and तब से वो वहाँ पे भटक रहा है. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एट हर ग्रैंड फादर्स टाइम. उस टाइम पे भी वो बहुत 20 साल पुराना था, अभी तो 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे उसे वहाँ पे भटकते हुए. तो वहाँ पे फिर उसने ये बताया, एंड दे वर लाइक वी सॉ इट. एंड वाइल शी वॉज एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी टू ऑल ऑफ अस लाइक एट द पार्टी दैट डे, देयर वर 2 गर्ल्स हु लिव एट दिस अकोमोडेशन, राइट? एंड दे लाइक उनकी हालत ख़राब हो रखी थी सुन करके कि ये सब उनके घर के पीछे हो रहा है. एंड गेस व्हाट दे सेड नेक्स्ट? दे वर लाइक, I can't believe you just said that, because we have been hearing things. Every now and then we suddenly hear someone screaming. We hear like a kid crying in the middle of the night. Sometimes ऐसा फील होता है कि किसी ने हमारा कांच तोड़ दिया है, वैसा हल्का सा आवाज़ आता है. हम लोग किचन में भी साथ में जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है यहाँ पे आसपास जाने में. They were legit like they were working here, and the part time used to finish at like 1 or 2ish. They left the part time because they couldn't afford to go back home itni late raat mein. So because whenever they used to walk, they used to feel कि something is following them, and they did not turn back. And वो लोग पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बजाते हुए जा रहे थे. अब मेरे दिमाग में आया कि मतलब यहाँ के गोरे भूत है, तो उन्हें हनुमान चालीसा पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, तो कोई क्रिश्चियन प्रेयर आई गेस लर्न कर लो. बट द थिंग इज़ कि इट्स लाइक it's happening, it's like so scary. And like as I'm speaking, I'm also getting goosebumps. So yeah, they left the job and they were like so shit scared ki like whatever we have been hearing all these days, it's actually someone else has also witnessed this. So it means ki somewhat it's a tangible feeling, like it's true. So yeah.